समस्त को नमस्कार पिला माने जय जगन्नाथ मैं आपको स्वागत जनाऊँ आम आउ एक भिडियो तो पिला माने आपण माने समस्ते फास्ट सेमिस्टर क्लास आमर करूछंती जो मानकु भी आमर हैंडीटेन नोट्स भल लागुची आ से माने परचेस करबा को चाहूछंती तो स्क्रीन ऊपर आपन को नंबर शो करूची एथिरे आपण कांटेक्ट करंतु आपनकर हैंडीटेन नोट्स प्राइस आपन को 5टा बही आमर जोरा 500 रहउची सेटा आपन को केवल 400 आसीबो तो एबे ही कांटेक्ट करके नोट्स परचेस करंतु आउ क्लास आम क्लास अटेंड करिबा क्लास अटेंड कला पर आपन जुलाई मास जो एग्जाम रोची से समस्त की ऑल द बेस्ट आउ जहाँ भी आपन डाउट रहिबो किछि भी आपन क्वेश्चन रोची आपन हमको कमेंट माध्यम जणाई परिबे तो चलंतु आम क्लास आरंभ करिबा। हेलो स्टूडेंट वेलकम टू साईकृष्णा इंस्टीट्यूट एंड श्री इंस्टीट्यूशन। आज आम पढ़ा तुम लास्ट यूनिट फिजिकल साइंस जोड़ा तुम रही प्लानिंग फॉर टीचिंग फिजिकल साइंस। तुम मैंने तो अल्प बहुत जानी गोटे पेपर पढ़ेबा पूर्व केमती प्लान करा जाए जदि भी न जानिच मु तुमको टिके आग फर्स्ट बेसिक आइडिया दे दूची। देख गोटे सब्जेक्ट आम जो पढ़ेबा को जाऊ आज ए टीचर फास्ट आम कौन करूँ ना प्लान करूँ जो सब्जेक्ट आम नहींचे ताकू फास्ट डिवाइड करूँ जैसे सब्जेक्ट रे कौन कौन कंटेंट रहिला इच कंटेंट को केते समय भितर पढ़े हबो आउ केतेटा क्लास लागिबो। अधिकांश टाइम कौन हुए ना तुम जो करिकुलम प्लानिंग होते बा करिकुलम तैयारी होते सेतबेले से करिकुलम रे ही सब्जेक्ट वाइज यूनिट को डिवाइड कर दिया जाए थे आउ कौन कर ना ईच यूनिट रो ईच पार्ट को केतेटा ये सरीबो सेटा माने केतेटा क्लास रे सरीबो सेटा से करिकुलम रे ही लिखि देई थे बट बिफोर माने आफ्टर दैट जतो तुम माने निजे पढ़े माने पढ़ेबा को जीवो तो तुमको गोटे प्लानिंग करिया को पड़े जे मते केमती पढ़ेबार अछि कोन कोन कंटेंट रखिबार अछि केते समय भितर सारिबार अछि ऑल दिस तो यही सब जिनस को आमे कहू प्लानिंग लाइक वाइज ईयर प्लान लेसन प्लान सब्जेक्ट प्लान तो यही विषय रे आमे आज पढ़िबा। आउ तुम मैंने भलसे जानच गोटे जिनस गोटे काम करने पूर्व जो आम प्लान करूँ तो से कामटा एग्जीक्यूट करने बेले हमको इजी हुए। तो फास्ट तुम रही इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग फॉर टीचिंग। प्लानिंग इज एसेंशियल इन एवरी एक्टिविटी बी इट इन एजुकेशन फाइनेंस डेली एक्टिविटी इंडस्ट्रीज इटीसी। तो प्लानिंग टा हमरो सबू एक्टिविटी रे दरकार से एजुकेशन हो से फाइनेंस रे हो से आम डे टू डे एक्टिविटीज रे हो बा इंडस्ट्री रे हो सबू जगह रे प्लानिंग निहाती दरकार। गोटे देश चलिया को हेले भी हमको प्लानिंग करिया पड़िबो कौन सी गोटे जिनस करबा पूर्व हमको प्लान करिया पड़े। गोटे ट्रिप धर आम जावाक चाहूँ बिफोर दैट वी हैव टू प्लान आमको ट्रेन टिकेट करार अच्छी आमको टाइम फिक्स करार अच्छी आमको डेट फिक्स करार तो एवरीथिंग कौन सी भी एक्टिविटीज करूँ बिफोर दैट वी हैव टू प्लान सर्टन थिंग्स सो दैट जोटा कि आमको फ्यूचर रे कौन हम ना इजी हम आमर जो आइडियाज हो बा आमर जो काम करार अच्छी से एक्जिक्यूट करार ठीक अच्छे। Without planning, one can't find out how they are proceeding and what is the destination. Destination planning is considered as a backbone of an institute. बुझिएला? In every educational institution, planning is necessary. सबु educational institution रे तमरो planning टा necessary. The teacher has to plan the above following factor. कौन कौन गोटे टीचर प्लान करिबा दरकार। The objective to be achieved by teaching a particular method, the type of behavioral changes to be brought about in the students, the method to be used for teaching, the teaching activities to be provided, the learning experiences that are to be provided, the material required for teaching learning process, the experiments to be done and the tools to be employed for teaching. बुझीगला तो तुमको पूरा पढ़ी शुणेदेली तो
बुझाऊँ शुण फास्ट गोटे टीचर गोटे सब्जेक्ट पढ़ेवा पूर्व से सब्जेक्ट पढ़ेबार तार कौन मोटिव तार कौन ऑब्जेक्टिव सेटा गोटे प्लान करबा दरकार केमती से ऑब्जेक्टिव को तांको स्टूडेंट मान पाखरे पहुँचेब केमितिया बिहेवियर करिवो केमिति ताकू एक्सप्लेन करिवो सेटा से गोटे प्लान करबा दरकार को मेथड यूज करिवो गोटे टीचर सेटा भी प्लानिंग करबा दरकार कौन कौन एक्टिविटीज देखैबो बा कौन कौन एक्टिविटीज करी तांको बुझेइबो सेटा भी प्लान करबा दरकार तापरे केमिति तांको एक्सपेरिमेंटली बुझेइबो देखैकि बुझेइबो ए जिनसटा एको एड यूज करिवो टीचिंग एड यूज करिवो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल कौन यूज करिवो ए सबु जिनस देखैबा दरकार बा ए सबु जिनस प्लान करबा दरकार ठीक अछि तो एतिक तुम लिखिदेला पर लिखिबो बाय कीपिंग ऑल दिस फैक्टर्स इन माइंड द टीचर हैज टू प्लान एट 3 लेवल मु तुमको कहितली गोटे होची ईयर प्लान गोटे सब्जेक्ट को गोटे ईयर रे हमकू पढ़ेबार अच्छे गोटे वर्ष पई गोटे सब्जेक्ट रही तो से गोटे वर्ष रे जेतिकी हमर एजुकेशनल डे रहिला बा छुट्टी दिन को छाड़ी की जेतिकी दिन गोटे टीचर स्कूल ले से सब्जेक्ट को पढ़ेबो फर्स्ट ताकू से कौन करबा दरकार ईयर वाइज गोटे ईयर रो टोटल मंथ को डिवाइड करी ताकू गोटे 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 पार्ट रे आगो सेपरेटली प्लान करिवो जे एई दिन ए मंथ रे एया पढ़ेबी से मंथ रे एटा सरिबो ए मंथ रे एटा सरिबो कारण ताकू खाली पढ़ेबार भी नहीं पिला माननकू एग्जामिन भी करिबार अछि क्वेश्चन पेपर भी सेट करिबार अछि आउ आंसर शीट भी देखिबार अछि आ छुआ माननकू रिजल्ट भी डिक्लेयर करिबार अछि तो ए सबु भितरे ता सहित स्कूल डिफरेंट फंक्शन रे भी छुआ माननकू पार्टिसिपेट करिबार अछि कारण तो सी कोन आउ एमिति भी करि परिबो कि एनुअल डे रे जाई कि पाठ पढ़ाई परिबो कि तो सबु छुट्टी सबु फंक्शन को केमती माने सिक्वेंशियल रखिकरी प्लस ता सहित से छुआ को केमती पाठ पढ़ेबो सेटा भी गोटे टीचर को प्लान करबा को पड़ेबो ई दैट इज ईयर प्लान गोटे ईयर रे तुमको कोन सब्जेक्ट पढ़ेबार अछि ईयर प्लान करदेला पर ईयर प्लान में से कौन करिवो ईच एंड एवरी पार्ट को गोटे सब्जेक्ट रो यूनिट रे डिवाइड करदेव तुम मैंने देखिथिबो तुम मैंने +3 रे भी पढ़िथिबो जे गोटे सब्जेक्ट तुम धर बायोकेमिस्ट्री हो कि तुमर फिजिक्स रो कोनोसी ये हो पेपर हो तार सब 4टा कि 5टा यूनिट थे तो ईयर रे कौन हुए यूनिट रे डिवाइड हुए तापर तुम आसला यूनिट प्लान ईच यूनिट रे जो कंटेंट थाए ताकू केतेटा क्लास रे गोटे कंटेंट को सरिया पड़ो से कंटेंट पाई कौन कौन दरकार हबो एक्सपेरिमेंट केतेटा दरकार हबो प्रैक्टिकल वर्क जोटा केतेटा दरकार पड़ो थ्योरी क्लास केतेटा दरकार पड़ो ए सब जिनस को प्लान करिया हबो यूनिट प्लान सरीगला परे लास्ट हो जे तमरो लेसन प्लान से जो यूनिट रो ईच कंटेंट थिबो लिस्ट कंटेंट को तमे गोटे गोटे दिन रे कोन पढ़ेबो गोटे दिन रो गोटे सब्जेक्ट रो गोटे यूनिट रो जो कंटेंट तमे पढ़ेबो दैट इज लेसन आ सेई लेसन को तमे केमती प्लान करबो केमती छुआ हम पाखरे पहुंच जाई परिबो से कंटेंट केमती छुआ बुझी परिबे मे भी ब्लैक बोर्ड रे तमें ताको ड्र करिकी ता छुआ मानकू चार्ट द्वारा बुझेबो कि कोनोसी गोटे मॉडल शो करिवो कि कोनोसी गोटे वीडियो शो करिवो कि कोनोसी गोटे ऑडियो शो करिवो ता सहित छुआ मानकू लर्निंग बाय डूइंग प्रोसेस रे एक्सपेरिमेंटली ताको एक्सप्लेन करिवो ए सब जिनस तमे प्लान करिवो तो फास्ट होची तमरो कोन ना ईयर प्लान In the beginning of academic year, every teacher is allotted the subject to be taught in that particular academic year. मैं तुमको बुझेली जहाँ बुझेली इटा लिखा है So the first thing that a teacher to do after the allotment of the subject plan how to allotment of the subject पर कॉमा रहिबो plan how to teach that subject in the full academic year. टीचर रो मेन काम होची केमिति से सब्जेक्ट को गोटे होल एकेडमिक ईयर रे से कंप्लीट करिवो सेति पई प्लान करबा दिस प्लानिंग ऑफ द ईयर वर्क इज नोन एज ईयर प्लान ठीक अछि as a science teacher they should plan for a year first he should break the whole subject matter into small set of related facts दिस रिले तुमको आई होप तुम मानू बुझा इजी होतिबो कारण मु तुमको तो एटा फास्ट रु बुझेली जेमति कंप्लीट सब्जेक्ट को से छोट 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 खंड रे जोटा को हम यूनिट बोली कहू ताको डिवाइड करबो
तापरे कौन करिवो दिस रिलेटेड फैक्ट्स आर टू बी अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल एंड लॉजिकल लॉ ऑफ लर्निंग एमिति नुह जे फास्ट लास्ट पार्ट को फास्ट पढ़ेबो लास्ट जहाँ जहाँ पढ़ेबा कथा ताको फास्ट पढ़ेबो मझिरु तापर पढ़ेबो सेमति नाही सिक्वेन्सुअली फास्ट कौन गोटे छुआ जानिबा दरकार तापर गोटे छुआ कौन जानिबा दरकार तापर गोटे छुआ कौन जानिबा दरकार ए सब जिनस को से सिक्वेन्सुअली डिवाइड करिकी छोट 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 खंड बा छोट 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 पार्ट रे डिवाइड करिवो लेसन शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जहाँ मु तुमको कहली लेसन टा सब बळे गोटे सिंपल बेसिक रु कॉम्प्लेक्स आड़ को जिबा दरकार known to unknown and topics should be covered within the time duration all the subject teachers should get together and prepare a year plan in a uniform manner while planning for the whole year the teacher has to take into consider the following factor कौन कौन गोटे टीचर consider करिवा दरकार गोटे year planning कला बेले फास्ट होची यूनिट टू बी taught in a subject objective to be realized through various unit total number of period available for a academic year number of period for teaching and number of period for testing I hope you'll understand all these things because मु तुमको कहली जे गोटे एकेडमिक ईयर रे खाली टीचिंग प्लान हमको करिया पड़िबोनी गोटे छुआ मानकर एग्जाम भी करिबा को पड़िबो तो ओवरऑल ए सब जिनस को गोटे टीचर को मैनेज करिबा को पड़िबो जोटा को हमें कहू ईयर प्लान बुझिएला देन नेक्स्ट होचे हमरो यूनिट प्लान The planning for a unit is known as unit plan तमे कौन करथिलो ईयर प्लान ने यूनिट रे डिवाइड करथिलो बतन यूनिट को each content को lesson ने डिवाइड करिवो The planning for a unit is known as unit plan. In unit planning, the whole syllabus is divided into small workable section or subunit. One unit may contain lesson covered 5 to 6 period. 6-7 पीरियड रे जति पढ़ी हेबो गोटे यूनिट रे सेति रहे अराउंड सेमति कहि हेबनी characteristic it should achieve certain set of objective and specification it should have similar type of content it should be based on learning by doing it should be according to the need capability and interest of the learner it should be related to physical and social environment of the pupil it should satisfy the future need of pupil it should provide activities like project work exertion all this it should have enough scope for evaluation बुझिएला ए सब जिनस तमरो यूनिट प्लान रे रहबा दरकार तापर होची इंपोर्टेंस एंड यूज ऑफ यूनिट प्लान to clear the general aims as well as specific aim of teaching ये कौन करे जनरल एम सहित टीचिंग रो स्पेसिफिक एम को भी फुलफिल करे it helps to develop certain type of skill among the student टाइम सेव कराए इट डेवलप इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट टुवर्ड लर्निंग टीचर प्रिपेयर सब्जेक्ट मैटर थरोली हैला स्टेप्स इन्वॉल्व इन यूनिट प्लानिंग फास्ट प्रिपेरेशन करिवो प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करिवो प्रेजेंटेशन करिवो समराइज करिवो ताकू ता ड्रिल करिवो देन इवैल्यूएशन करिवो तापरे होची पीरियड प्लान जोटा तमे लेसन प्लान बोली को An activity well planned in advance comes out to be successful. So it is the class teaching before is the class teaching before making the period plan. The teacher should know what he going to teach. कौन से पढ़ेबा को जाउची केमिति से पढ़ेबो कौन कौन टीचिंग एड यूज करिवो कौन क्वेश्चन से छुआ मान को पचारिबो केमिति तांकर प्रीवियस नॉलेज सहित प्रेजेंट टीचिंग को रिलेट करिबो ऑल दिस थिंग्स गोटे लेसन प्लान करबा पूर्व गोटे टीचर को प्लानिंग करबा गोटे लेसन पढ़िया पूर्व गोटे टीचर को प्लान करबा को पड़े सो द लेसन प्लान इज अ मिरर इमेज ऑफ द क्लासरूम बिहेवियर ऑफ अ टीचर आई होप तुम मानू कौन दिखाई जो प्रैक्टिकल खाता गोटे दिखाई से प्रैक्टिकल खाता तुम जो लिखुव तुम केमती लेसन प्लान कर प्रैक्टिकल तुम लिखि गोटे रो
डेट पड़ो आउ गोटे रो रहिबो कौन से डेट रे तुम पढ़ेइबो गोटे टीचर सेटा लिख आउ गोटे डेट रहिबो से कौन से टॉपिक भितर तुम कौन पढ़ेइबो कौन टीचिंग एड यूज करिवो सेटा रहिबो लास्टली रहिबो तुम कौन क्वेश्चन पचारिबो तापरे रहिबो तुम छुआंकर रिमार्क हैला एटा होची गोटे लेसन प्लान नो कंटेंट तुम माने जदी माने प्रैक्टिकल खाता लिखिबन तुम माने भल से बुझ पारिबो सो द लेसन प्लान इज द मिरर इमेज ऑफ द क्लासरूम बिहेवियर ऑफ ए टीचर माने गोटे टीचर से दिन से क्लास रे जो लेसन टा पढ़ेबो केमिति पढ़ेबाठू आरंभ करी केमिति पढ़ेला ऑल दिस प्लानिंग जेतबले गोटे एक्सप्लेन करा जाय गोटे प्लान करा जाय ताको लेसन प्लान बोली कहो दो लेसन प्लान वी कैन सी द ओरिजिनलिटी एंड टैलेंट ऑफ अ टीचर थ्रू लेसन प्लान देखिकी ही गोटे टीचर रो ओरिजिनलिटी आउ टैलेंट को आमे पहचानी पार we can say lesson plan is a blueprint guide map for action creative piece of work comprehensive chart of classroom teaching ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ନା ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ଯାହା ପଢ଼ା ହେବ ଯାହା ହେବ ତାର ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ଚାର୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ତ ତାପରେ ହେଉଛି ତମର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଅଫ୍ ଅ ଗୁଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ it should be written it should have clear objective linked with previous knowledge it should show the methods and technique to be used it should include teaching aid content subject matter should include summary should include assignment use of blackboard provide scope for evaluation and language बुझियला तापरे तमरो होची advantages of lesson plan make the teacher self-confident self-reliant well organized and systematic it saves times and student get better understanding of the subject तापरे होची तमरो कोन ना herbarian step of lesson plan हर्बारियन स्टेप ऑफ लेसन प्लान ने तुमको हर्बारियन केमती लंग लेसन प्लान को स्टेप वाइज प्लानिंग कट लेसन को सेटा तुमको पढ़िया पड़ो फर्स्ट हो तुमरो प्रिपरेशन देन प्रेजेंटेशन तापर कंपैरिजन और एसोसिएशन जनरलाइजेशन एप्लीकेशन एंड रिकैपिचुलेशन टा कंक्लूजन कहा जाए हैला दैट कंस्ट्रक्टिविटी अप्रोच एंड तमरो ये रहिबो कंस्ट्रक्टिविटी अप्रोच पर टीचिंग स्ट्रेटजी एकेडमिक मॉडल रहिबो एकेडमिक स्टैंडर्ड रहिबो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रहिबो क्वेश्चन आ मेक हाइपोथेसिस रहिबो ये सब जिंस तमरो रहिबो पढिबा हमें फर्स्ट हर्बारियन स्टेप ऑफ लेसन प्लान ने फर्स्ट तमरो रहिबो प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू जे.एफ. हर्बर्ट द टीचर शुड फर्स्ट ऑफ ऑल prepare the mind of student to receive new knowledge केमती गोटे स्टूडेंट न्यू नॉलेज को गेन कर परिबे सेति पई टीचर को तांको प्रिपेयर करिया पड़िबो गोटे लेसन स्टार्ट करिया पूर्व केमती ना डिफरेंट थिंग को रिलेट करेबो प्रीवियस नॉलेज को तांकर माने तांको मुंड भितर आ टिके टिके पुरेबे तो केमिति रिलेट करे कि पाठ पढ़ेबो दैट इज प्रिपरेशन तापरे प्रेजेंटेशन आफ्टर द फर्स्ट स्टेप द लेसन शुड बी प्रेजेंटेड इन सिंपल एंड फैमिलियर वे क्वेश्चनिंग इज एन इम्पोर्टेंट डिवाइस इन दिस स्टेप तापर स्टूडेंट को क्वेश्चन करा हबो ता मुंड को पजल करा हबो कंफ्यूज हेले इंटरेस्ट बढ़िबो तापरे कंपैरिजन in this step the student asks to observe carefully and compare them with other set of example and facts हैला तापरे the teachers should bring association between the new learning and already known ideas or fact जो पढ़ेबे जो पढ़ेले आ जो आइडियाज छुआ माने जानि चंदी तांको सहित जो रिलेट करी तांको बुझेबा को ट्राई करेबे तापरे होस तमरो जनरलाइजेशन इट शुड बी डन विथ द participation of pupil this step involve कोन तमरो थिंकिंग पावर को तांकर एनहांस करेबो सो दैट से माने से जिनस को जनरलाइज करिवे रूल को फॉर्मुलेट करिवे
तापर हो तुम एप्लिकेशन व्हाट एवर द स्टूडेंट लर्न शुड बी अप्लाइड टू न्यू सिचुएशन एंड अनफैमिलियर फैक्ट सो दैट देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग नॉलेज गेन तो कौन हम छुआ मानक ये निजे को से जिनस को यूटिलाइज कर चांस दब तापर रिकैप्चुलेशन इट इज द लास्ट स्टेप इन दिस स्टेप द टीचर विल नो व्हाट द pupil have learned where they stand and whether the teacher himself is successful is last तुम कन्क्लूजन से एठू गोटे टीचर जानीदेव गोटे छुआ केते बुझिला केते से पाठटा को तार ग्रहण कला आउ टीचर जो एम थिला से लर्निंग मैटर को पढ़ेबार अछि लेसन को पढ़ेबार अछि हेटा एमटा फुलफिल हैला कि नाही तापर होची कंस्ट्रक्टिव अप्रोच नाउ ए डेज कंस्ट्रक्टिव अप्रोच इज वाइडली यूज्ड बाय एजुकेशनलिस्ट इन इंडिया एंड अब्रॉड National Curriculum Framework 2005 published by NCERT lays a lot of this emphasis on this approach of learning. आम NCERT ये approach को receive करिछि कौन कौन It based on the work done by John Dewey and Maria Montessori and Jean Piaget. J. Brunner and Lev Jagodsky. Hela constructivist epistemology assumes that learner construct their own knowledge on the basis of interaction with their environment. फास्ट तुम रोचे एज्यूमसन ऑफ कंस्ट्रक्टिविटिज्म मानकर एज्यूमसन नॉलेज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम एक्सपीरियंस वेरी गुड लर्निंग इज अ पर्सनल इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्क इट इज अ एक्टिव प्रोसेस एंड डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस लर्निंग शुड बी सिचुएटेड इन द रियलिस्टिक सेटिंग Testing should be integrated with the tasks and not a separate activity. Testing ता तम लर्निंग सहित ही इंटीग्रेटेड होकर रहिबा दरकार एटा सेपरेटली करिबा दरकार नाही टीचिंग स्ट्रैटेजी तापर तुम आसला टीचिंग स्ट्रैटेजी एंड एकेडमिक स्टैंडर्ड एटा तुम सबले पढ़े एग्जाम रे CEE मॉडल पीरियड प्लान फॉर क्लासरूम टीचिंग एकेडमिक स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू NCF 2005 एटा प्राय तो तुम एग्जाम रे पढ़े 2005 RTE 2009 and APSCF 2011 children are expected to achieve the academic standards specified for the class the following academic standards should be accomplished as learning outcome in science education first है conceptual understanding This indicates how best the student has understand the concept. Conceptual understanding includes एटा होची गोटे स्टूडेंट केते भलो से कॉन्सेप्ट को बुझिला फास्ट एक्सप्लेन करिवो एक्सप्लेनिंग तापर क्लासिफाई एनालिसिस एग्जांपल दबो रीजन क्रिएट करिवो आउ मेंटल इमेज को फॉर्म करिवो फॉर्मिंग मेंटल इमेज हैला एटा हउस तमरो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग गोटे छुआ केते कॉन्सेप्ट बुझी फास्ट एक्सप्लेन कलो तापर से एक्सप्लेन को सेपरेटली ताको बुझेलो तापर एनालिसिस करबो गोटे छुआ केते बुझुची ताको एग्जांपल दे आहुरी ताको एग्जांपल दबो ताको रीजन दबो जे एटा एंटेल सेमते ताको पजलिंग करबो तापर ता मेंटल स्टेट को पढ़िबो ता मेंटल इमेज को फॉर्म करबो फास्ट तमर सेटा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग सेकंड होची आस्क क्वेश्चन पचारिबो ask question and make hypothesis तमे hypothesis suppose एटा एमते एतले एटा हेतांदा hypothesis दबा क्वेश्चन पचारिबो ठीक अछि देन तमर होची experimentation and field investigation choosing required apparatus setting it off observation recording analyzing concluding and generalizing come under this ए सब दिक अंडर रे असला केमते से करचंती केम कोन बुझिचंती ए सब दिनस तापर होची information skill and project in this course of learning the children have to collect a lot of information using different method project is an activity in which the children choose a problem and follow a systematic procedure to find the solution
तापर हो तुम कम्युनिकेशन थ्रू ड्राइंग एक्सप्लेनिंग बाय ड्राइंग पिक्चर एक्सप्रेस थ्रू पिक्चर्स मेकिंग द पार्ट ऑफ अ पिक्चर कम अंडर दिस ड्राइंग ब्लॉक डायग्राम्स फ्लो चार्ट्स क्लासिफिकेशन टेबल ये सब जिनस तुम फिजिक्स तुम जदि तुम सोलार सिस्टम देखी ही न था ताल तुम तुम गोटे आइडिया आसता तो ड्राइंग द्वारा कम्युनिकेट बट मु तुमको एड द्वारा टीचिंग एड द्वारा कम्युनिकेट करवा तापरे एप्रिसिएशन एस्थेटिक वैल्यू डेवलपिंग कॉम्पिटिटिव स्पिरिट and the wisdom by courage to accept failure and success alike developing characteristic like sense of appreciation and accept reality last हो तमर कौन application to daily life तापर तांको daily life रे तांको से concept apply करबा को दबो ठीक अछि making efforts to protect environment and preserve biodiversity recognizing the fact that every living being has the right to live alive to have an awareness of nature environment and behave responsibility ए सब जिनस हमर रहिबा दरकार सरला तमर लास्ट यूनिट आई होप तुम मन सब बुझी पारथिबो कौन कौन ए यूनिट रे अछि भेरी इजी यूनिट आ ए यूनिट रे लेसन प्लान ईयर प्लान ओडा सब क्वेश्चन आसी पारे आसीबो तो सियोर कारण बेसी किछि तो लॉन्ग क्वेश्चन नाही तो तमरो लेसन प्लान गोटे क्वेश्चन हे परिबो तापर मु तम जोडा कहिली सेटा गोटे क्वेश्चन हे परिबो कोटा तमरो क्वेश्चन हे परिबो ना टीचिंग स्ट्रेटजी ना एकेडमिक स्टैंडर्ड गोटे क्वेश्चन हे परिबो सी मॉडलटा हैला ओके धन्यवाद पिला माने आशा करी आपण माने क्लास टी पूरा देखिथिबे क्लास टी आपण पूरा बुझिथिबे जहां भी आपण डाउट रहिबो आपण हमको कमेंट रे जणै परिबे जहां भी आपण को डाउट रहिला जदि आपण नोट्स को परचेस करबा को चाहउछली स्क्रीन रे हम नंबर शो करूचे आपण सेठु परचेस करि परिबे आउ हमर 2024-25 पई एडमिशन स्टार्ट हे जाईची जो माने भी जे कोनसी पिला इंटरेस्टेड अछंती आपण हमको कांटेक्ट करि जणै परिबे मो स्टार्टिंग रो भी पिला को कहिची आपण एडमिशन करंतु न करंतु डिटेल्स बुझंतु ठकामी जो बंचंतु कि आपनकर कौन कौन डॉक्यूमेंट दरकार आपनकर जो कोर्स भी आपन को एजेंट के कौन से इंस्टीट्यूट कहूची से कौन कौन इंक्लूडिंग रहिबो कौन कौन एक्स्ट्रा आपन को माने आपन को एजेंट माने हिडन चार्जेस करके नहीं जाई परिबे तो आपन हमखे करंतु कि न करंतु डिटेल्स फोन करके बुझंतु जहा द्वारा आपन आपनकर संपूर्ण डाउट क्लियर करि परिबे तो धन्यवाद पिला माने जय जगन्नाथ।